हेलो, वेलकम टू एडवेंचर आईएएस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी की पॉइंट्स और जो हाइलाइटेड न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके जो प्रीलिम्स 2023 में जो पूछा जा सकता है। और आपको जैसे पता है कि साइंस एंड टेक में अ, जो जो भी स्पेस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। So, welcome to all of you. Join this live session regarding your science and tech current affairs. सो साइंस एंड टेक में मैंने पहले भी अभी भी कहा कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो साइंस एंड टेक के पार्ट से होते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसे। ओके, सो आप लोग जुड़िए, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ विद इन 2 मिनट्स। सो फर्स्ट है आपका डार्ट मिशन। ओके, सो नासा डार्ट है। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन विल बी ह्यूमैनिटीज़ फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट। ओके, सो ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट है जो नासा के द्वारा किया गया है टू प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम एस्टेरॉयड दैट कुड पोज ए थ्रेट टू इट इन द फ्यूचर। सो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डार्ट मिशन है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। और हम हाल ही में बहुत सारी न्यूज़ में भी देखे थे कि मीटरॉइड्स ये सब आने वाले टाइम में बहुत ही चैलेंजेस और कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं टू दिस अर्थ। सो इसके लिए बहुत सारे मिशन इसरो ने भी कंडक्ट किया था टू टैकल दैट meteorite and other thing which enters अर्थ सरफेस। सो एक वो उससे एक डार्ट मिशन है। सो काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड से इसे यूज़ किया जाएगा। विल बी टेस्टेड टू रीडायरेक्ट और डाइवर्ट द एस्टेरॉइड्स डायमॉर्फोस बाय क्रैशिंग इनटू इट। ओके, सो जो भी एस्टेरॉइड जो अर्थ के सरफेस में और जो अर्थ के अराउंड अगर कोई भी मिट्रॉइड या एस्टेरॉइड कुछ आए तो उसे क्रैश कर दिया जाएगा इस मिशन के द्वारा। सो aim to the aim of the mission is to understand shape and composition of the asteroid based on the change in its orbit and based on the ejected material. Dart weighs around 600 kilograms. Okay, so second point आप लिख सकते हैं कि ये 600 kilograms वे होगा इसका। Dart will target Didymos till about 50 minutes before impact. Other technologies like the Draco camera and rollout solar arrays, जिसे हम रोशा भी कहते हैं, will also be tested for future space exploration. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या था? ये डार्ट का फुल फॉर्म डबल एस्ट्रॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट होगा। ओके, ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम टेस्ट है। सेकेंड है काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड। ओके, थर्ड है ये ड्रैको कैमरा एंड रोल आउट सोलर एरीज है। ओके,
एंड सेकेंड टॉपिक, फर्स्ट हो गया हमारा डार्ट, डार्ट मिशन नासा के द्वारा। सेकेंड है हुकोटो मिशन। ओके, सो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ये एक जापानीज़ नाम है। ओके, हुकोटो। सो हुकोटो मिशन में ये जापानीज स्पेस स्टार्टअप से लॉन्च किया है ये प्राइवेट लैंडर M1 टू द मून अंडर इट्स हकुटो आर मिशन। ओके, सो मिशन है हुकुटो आर मिशन फ्रॉम द स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस एक्स फैल्कन 9 रॉकेट। सो व्हाट इज़ हुकोटो आर मिशन? सो हमें जानना है कि हुकोटो आर मिशन है क्या। So Hukoto R is Japan's first ever lunar mission and the first of its kind by a private company. So ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Hukoto मिशन जो है ये फर्स्ट एवर, रिमेंबर गाइस, फर्स्ट एवर लूनर मिशन है एंड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बाय ए प्राइवेट कंपनी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। So the name refers to the white rabbit. So Hukoto means white rabbit. So recently हम GS में भी एक टॉपिक पढ़ रहे थे और वो एक लोशार बोल के जो लद्दाख तिब्बतन जो है रीजन है, वहाँ पर लोसार को भी एक तरह से रैबिट के फॉर्म इन केस। सो लोसार एक फेस्टिवल होता है। So here also Hukoto refers to the white rabbit that Japanese folklore suggests on the moon. Okay, so many region, many countries has their own set of and traditions, culture. So we in India believes that uh, we compare Earth and Moon as Mama and Ma. Okay, so we refer Earth as a Ma and Moon as a Mama. So here the Japanese also they refer that lives on the moon. Okay, so the M1 lander will deploy two robotic rovers. M1 lander. So remember, guys, this M1 lander deploy two robotic rovers. Okay, first a two-wheeled baseball-sized device from Japan JAXA Space Agency. So see, इसरो इंडिया का इसरो है, वैसा जापान का जैक्सा है। ओके, यूरोपियंस के से है यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उसी तरह फ्रांस के भी है और उसी तरह आपका अमेरिका का जिसे हम नासा कहते हैं। ओके, सो सेकेंड पॉइंट है द फोर व्हील्ड रशीद एक्सप्लोरर मेड बाय द UAE। ओके, सो रशीद एक्सप्लोरर मेड बाय द UAE। सो आप नाम से भी इसे एलिमिनेट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट नाम है हुकोटो, हुकोटो इज जापानीज़ नेम, हुकोटो से आप इसे ही कर सकते हैं। सेकेंड है आपका रशीद एक्सप्लोरर मेड बाय UAE। ओके, सो ये सब कुछ पॉइंट याद रखना है। थर्ड टॉपिक आप नोट करिए, PSLV C54। थर्ड टॉपिक हमारा है PSLV C54 और PSLV C54। So PSLV C54 lifted off carrying an Earth observation satellite. Okay, so PSLV बहुत सारा जो लिफ्टेड ऑफ कैरिंग एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, EOS-06 और ओशन सैट। सी मैपिंग के लिए, ओके, मैपिंग के लिए हम बहुत सारा आपका जो सैटेलाइट को हम सैट से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर। और बहुत सारा क्या होता है कि जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रोच से कहा जाता है कि तो इसरो को बोला जाता है या कोई भी स्पेस एजेंसी को बोला जाता है कि ये टू सस्टेनेबल। ओके, लाइक अगर कहीं डिजर्टिफिकेशन है और अगर हमें उस एरिया का अगर हमें सर्वे चाहिए, ठीक है, या जो डिजर्टिफिकेशन हो रहा है या जो अगर कहीं पर एरिया जो बहुत कोई भी अगर क्लाइमेट चेंजेस हुआ है तो उसके लिए ये सारे सैटेलाइट को यूज़ किया जाता है टू ऑब्जर्व। सो वैसे ही PSLV C54 ओशियन सेट है, इज़ अ प्राइमरी पेलोड एंड 8
Thibault nano satellites. Okay. Second point है the PSLV C-54 is the 56th mission of Indian Space Research Organization. सो आप इसे नोट कर सकते हैं, PSLV C-54 जो है वो 56 है इसरो का. ओके. पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ओके. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट विक्रम एस. सो विक्रम एस जो है इज सेट फॉर लॉन्च बिटवीन November 12 and 16. हैदराबाद बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस अनाउंस्ड. सो बहुत सारा इंडिया में भी आपका बेसिस हैं स्पेस को जो भेजा जाता है, बहुत सारा है. आंध्र प्रदेश में है, हैदराबाद में है, स्पेस ऑफिसेस हैं. सो द मेदन मिशन ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस नेम्ड प्रारंभ. सो प्रारंभ को इंग्लिश में हम बिगनिंग भी कहते हैं. सो विल कैरी 3 कस्टमर पेलोड एंड इज सेट फॉर लॉन्च फ्रॉम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम Sriharikota. The launch mission will be suborbital space flight. Okay, and 3 पेलोड होगा जो 2.5 kg सैटेलाइट होगा. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इसमें. स्पेस किड्स इंडिया विच हैज़ बीन बिल्ड बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, द US एंड इंडोनेशिया. ओके. सो ये है विक्रम एस रॉकेट. क्या है? विक्रम सीरीज़ है, नेम्ड आफ्टर द फाउंडर ऑफ इंडियाज स्पेस प्रोग्राम डॉक्टर विक्रम साराभाई. आर ऑल कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर दैट can launch up to 800 kg of payloads to the low Earth orbit. Okay, low Earth orbit. The Vikram S rocket is a single stage suborbital launch vehicle which would carry 3 customers, help test and validate the majority of the technologies in the Vikram series of space launch vehicle. Okay, ये आप टॉपिक नोट डाउन कीजिए. ये विक्रम एस का ओके प्रारंभ होगा. द मेडन मिशन ऑफ स्काई रूट एरोस्पेस नेम दिस प्रारंभ. ओके. एंड अनदर टॉपिक हमारा है नेविक, NAVIC नेविक. ओके. सो हमारा अगला टॉपिक नेविक है. सो टू प्रमोट द यूज़ ऑफ नेविगेशन. सो सी एग्ज़ाम में एलिमिनेशन कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ योर नेम इटसेल्फ. ओके. So to promote the use of navigation with the Indian constellation. So Indian constellation, the terminology यहाँ क्या है? Navic है. Okay. So Navic means your navigation with the Indian constellation. The Indian version of GPS, the Indian Research Organization, Space Organization ISRO, will introduce the L1 frequency in all its future satellites. Okay. The L1 is the oldest and most established GPS signal which even the less sophisticated civilian use devices such as smartwatches are capable of receiving. Thus, with the band, the use of Navic in civilian use gadget can go up. So, हमें एक बात याद आ गया. पहले इंडिया में GPS बहुत कॉस्टली अफेयर था. ओके. GPS तभी हमें से कोई भी सैटेलाइट प्रोग्राम जो भी होता है वो बैंडविड्थ और स्पेक्ट्रम में काम करता है. ओके. सो आप जो भी ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जो कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, अगर उसका कोई भी सैटेलाइट प्रोग्राम है सो वो कोई एक सैटेलाइट मैकेनिज़्म से काम करता है. ओके. तो उसमें क्या होता है, हमें स्पेक्ट्रम खरीदना होता है. वो स्पेक्ट्रम का ऑक्शंस होता है. वो स्पेक्ट्रम खरीदने के बाद हम अपना जो भी है, जो भी लाइक कोचिंग से या कोई भी प्रोग्राम जो डायरेक्ट लाइव चलते हैं, सो वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है. ओके. सो अर्लियर डेज इंडिया के पास GPS का बहुत ही प्रॉब्लम हुआ करता था और बहुत कॉस्टली अफेयर था वो.
बट आज के जो करंट सिचुएशन है, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम, स्पेस एजेंसी जो है, वो बहुत ही हाईली डेवलप्ड हो चुका है। इंडिया का खुद एक जीपीएस सिस्टम है। ओके, सो नेविक का कवरेज क्या है, हम कवरेज देखते हैं। इट कवर्स इंडिया एंड ए रीजन एक्सटेंडिंग अप टू 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इंडियन mainland primary coverage area with plans of extension. An extended service area lie between the primary service area and a rectangle area enclosed by the 30th parallel south to the 50th parallel north and the 30th meridian east to the 130th meridian east. So ये geographic indication दे रहा है. Okay, coverage see like GPS. So GPS is a worldwide. Okay, those countries which are uh, anyhow paying or member of that, so they are getting the signals from GPS. Okay, but GPS is not Indian version. So like this, if any neighbor, any country of like see India's neighbor except China and one or two countries, they their own, they do not have their own space agency, so they are rely on India. Okay, for many various things. So India is the key player in that South Asian or global South region. Okay, so India is if any neighbor or any country is willing to join the that mission, or they are demanding the spectrum or bandwidth, so India can offer with obviously India will ask some charges. Okay, so let's continue. So see the 30th parallel south, parallel north. So 50 to 30 north and 30 meridian east to 130 meridian east. Okay, remember this. So next topic, write down the next topic is Chandrayaan 3. Our next topic is Chandrayaan 3. Okay, our next topic is Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3. Chandrayaan 3 spacecraft is the third lunar. So see here, lunar means moon. Okay, any observation or any program which is conducted, which will, or any mention of lunar or solar. So make sure lunar means moon. Okay, so Chandrayaan 3 spacecraft is the third lunar exploration expedition. Okay, outlined by the ISRO. So Chandrayaan 3 is the third lunar exploration program of India. It will only consist of a rover and a lander. Okay, it will consist of a rover and lander and will communicate with the Earth via on orbiter from the Chandrayaan 2. Okay, the Chandrayaan 3 mission is a continuation of Chandrayaan 2. So आप पहले एक मिशन जो था वो किसी तरह से ना हो पाया, तो ये चंद्रयान 3 इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ चंद्रयान 2, which was launched in July 2019 and had the goal of putting a rover on the lunar south pole. Okay, so आप एक चीज़ हमेशा याद रखें कि स्पेस एजेंसी जो है वो अभी तक मून का एक ही पार्ट तक रीच कर पाया है. ओके, द अदर पार्ट ऑफ द मून, द ह्यूमन हिस्ट्री कैनॉट रीच टू दैट एक्सटेंट. सो बहुत सी बातें अभी मून एक्सप्लोरेशन में भी अभी बाकी है, कंडक्ट ना हुआ है. बट बहुत सारे स्पेस एजेंसीज इस पे काम हैं अभी. सो द विक्रम लैंडर्स सब्सिक्वेंट फेलियर promoted the development of a different mission to show of the landing skills required for the 2024 lunar polar exploration mission that is being proposed in collaboration with Japan. Okay, it will help it will have a landing module and an orbiter, but unlike Chandrayaan 2, this orbiter won't be equipped with the research payload. Okay, so the payload will be not attached with that. Okay, so next topic लिखे GSLV MK3.
GSLV Mk3. Next topic. So GSLV M3 also known as the launch vehicle Mark 3, और हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं इसे. सी 3 स्टेज, 2 स्टेज, 4 स्टेज व्हीकल जो भी लिखा हो, इट्स सिंपल मीनिंग इज दैट that the fuel fuel categorization. Okay, so see, if we are sending a rocket to space, so there is a vast changes in that upper your space of earth. Okay, so we cannot rely only on that liquid fuel. So there are variant in that also, variant stages in that also. Okay, so क्या होता है कि जो रॉकेट का जो स्टेजेस होता है वो ऑयल, सॉलिड, लिक्विड, और क्योंकि होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी जो प्लेन में सॉरी जो फ्रीक्वेंसी जो रॉकेट्स में होते हैं, जो अर्थ के जो आने टाइम, अगर हम स्पेस से अगर अर्थ पे लैंड करें तो वो कुछ ज़्यादा ही होता है. तो उसके चलते क्या होता है कि इंजन में आग लगने के कारण वो बहुत सारे कैटेगराइजेशन कर दिया गया है फ्यूल टैंक को लेके और उसको लेके. ओके, सो यू ऑलवेज remember these 2 3 point at 3 stage 4 stage vehicle. Okay, so the rocket GSLV Mark 3 is 43-meter tall. Remember, this is 43-meter tall, and even though it is the heaviest among India's operational launch vehicle, it is also the shortest. 43-meter tall, and it is also the shortest. GSLV Mark 3 weigh 641 tons, which is equal to the weight of 5 fully loaded passenger plane. Remember, see, 5 fully loaded passenger planes, commercial plane, is equal to GSLV Mark 3 weight. Remember this point. So how much payload we are sending to space. So GSLV can take 10,000 kilo satellites to lower Earth orbit. So most of the experiments are done in the lower Earth orbit. Okay. So our next point is Vyomitra. Vyomitra. Okay. So note it down. Vyomitra. The humanoid designed and developed by the Indian Space Research Organization (ISRO) to fly abroad unmanned test mission ahead of Gaganyaan human space flight mission is undergoing pre-flight ground test at the ISRO Inertial System Unit (IISU) here. Okay, so Vyom Mitra is a female looking spacefaring humanoid robot being developed by the ISRO to function on board the Gaganyaan, a crewed orbital spacecraft. A humanoid is basically a robot with the appearance of a human being. ISRO Vyomitra. Vyom means space, Mitra means friend. Space friend is also being called a half humanoid since he will only have a head, 2 hands, and a torso, and will not have lower limbs. Likely, any robot, a humanoid's function are determined by the computer systems to which is connected. So, Vyomitra is another hot topic in our coming UPSC Prelims 2023. Okay, note it down. Vyomitra. Vyoma means space and Mitra means friend. Okay. So, what are the tasks that Biomitra will perform in space? What are the tasks? What are the key features of Biomitra? So, first, receiving voice command, responding via speech, bilingual, monitoring of the crew module, operating switches, replacing carbon dioxide canisters, generating warnings, responding to the environment, attaining launch and orbital postures, receiving and acting on commands sent from ground stations,
procedures to use equipment on board the spacecraft's crew module, such as safety mechanism and switches. So these all are the few points. Remember this. Vyomitra is one of the important topic here. Our next topic is Rohini RH200. Okay, Rohini RH200. So RH200 is a two-stage rocket capable of climbing to a height of 70 km, bearing scientific payloads. ISRO has attempted the 200th consequently successful launch of Rohini RH200 sounding rockets from Tumba. Okay, Tumba or Thumba. So other operational Rohini variants are RH300 Mark II and RH560 Mark III. Okay, so these are the few points. You can write that Rohini RH200 is the two-stage capable rocket. First point you can remember. And another point is ah, the RH200 rocket had used a polyvinyl chloride. You remember this point is a very important point. RH200 rocket had used a polyvinyl chloride PVC based propellant. So once again I am telling, whenever in science and technology, if there is a mention of stages, so you just remember that uh, what you just remember that propellant, like how many, what are the stages of fuel uh, system in it. Okay, a compare as compared to PVC based propellant, HTPB based propellant is more energetic. Remember here, HTPV based propellant is more energetic, higher mechanical and interface properties, and has less defects due to lower processing temperature. Okay, due to lower processing temperature. So our next topic is India's first dark sky reserve in Ladakh. India's first dark sky reserve in Ladakh. Remember, so write it down. Our next topic is India's first dark sky reserve in Ladakh. The Union Territory of Ladakh will host India's first dark sky reserve, which will set up in Hanle area in the next 3 months. The Dark Sky Reserve is being built as a part of Ladakh's high altitude Chantang Wildlife Sanctuary. So, see, here one more question will arise. Where is Changtang Wildlife Sanctuary? So, in your mind, in a frequency of second, in a what चुटकी बजाते अगर आपको आंसर चाहिए इसका, तो आप इसका चैंगटेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लद्दाख आंसर कर सकते हैं. सो सी होता क्या है कि जो भी हम एलिमिनेशन टेक्निक जो हम सुनते आ रहे हैं और जो करते हैं, वो एलिमिनेशन टेक्निक हमारे क्वेश्चन से ही रिलेटेड होते हैं. जैसे मैं तभी एक टॉपिक पढ़ा रहा था, जो जापानीज़ स्पेस स्टेशन ने लॉन्च किया था मिशन को. सो हुकोटो रिलेटेड, आपको अगर कभी हुकोटो पूछा तो रिमेंबर आ जाना चाहिए कि हाँ हुकोटो जापान से रिलेटेड कुछ. अगर हम आपसे कहे कि चैंटांग चैंटांग दिस रीजन ऑफ तिब्बतन चाइना और लद्दाख इंडियन पार्ट, नॉर्थ ईस्ट, योर नॉर्दर्न पार्ट. So remember these tricks. Okay, continue with the topic. Definition of dark sky reserve. The International Dark Sky Association, IDSA, defines an international dark sky reserve IDSR as a public or private land of substantial size, at least 700 kilometers or about 1 lakh 73,000 acres, possessing an
exceptional or distinguished quality of starry nights and nocturnal environment, and that is especially protected for its scientific, natural, educational, cultural heritage and or public enjoyment. Why Ladakh is chosen as ideal location for DSR? DSR is full form is Dark Sky Reserve. So what is the importance of Ladakh here? So answer should be Ladakh is ideal for long-term observatories and dark sky sites because of its large arid area, high elevation and sparse population. Extreme cold and minimum temperature drops to minus 40 degrees Celsius. The Changtang Wildlife Sanctuary, the DSR Dark Sky Reserve site is situated around 4500 meters above sea level, which makes it a perfect host for telescopes. Okay, so what are the objectives with DSR? So just remember, okay, so objectives are to promote astrotourism. So you see, India is uh, if we restore, if we uh, if we allot a good budget in the tourism sector and we promote one local, one district, uh, one this program. So India is a good what? India is a good. India has its potential of becoming a global tourist destination, but we need to uh, secure or we need to promote in a global arena. Okay, so and we have to preserve our cultural heritage sites also. So one of the objective of DSR is to promote astrotourism. Okay, so you heard first time I think astrotourism. If you heard, then comment. If you heard this term first time, then you comment astrotourism. Okay, to offer clear sky for observation and for training purposes and sky gazing and a boost for village economy. Okay, so we today we covered 2 3 points. First is India's first dark sky reserve in Ladakh. First, second, Rohini RH 200. Third, Vyomitra. Fourth, GSLV Mark 3. Fifth, Chandrayaan 3. Sixth, Navik. Seventh, Vikram S. 8 PSLV C54 or PSLV C54, and ninth Hakuto mission, and 10th DART mission, and last but not the least is James Webb Telescope. Okay, the most powerful space telescope. So today we will discuss, and tomorrow we will continue with that. So today's last topic is James Webb Telescope. So James Webb Telescope is widely in news, and many of news agencies cover this. NASA's latest and most powerful telescope has captured new images of our solar system's largest planet, Jupiter. So in my YouTube channel today, I uploaded a kind of meme or reality shorts which tells about the importance of Jupiter, presenting it in a never before seen light. It is a space telescope being jointly developed by NASA, the European Space Agency, and the Canadian Space Agency. It has taken 30 years and $10 billion to develop and is being described as one of the grand scientific endeavors of the 21st century. Much of the universe remains unknown. The James Webb Telescope will hopefully provide a powerful window to help resolve some of the cosmos' many mysteries. Where it is placed, the James Webb Space Telescope will not be in orbit around the Earth like the Hubble Space Telescope is. It will actually orbit the Sun 1.5 million kilometers. Remember, 1.5 million kilometers or 1 million miles away from Earth. So this is so fascinating. If
just close your eyes and visualize what I am saying. 1 million miles or 1.5 million kilometers. Million, guys, million. If you close your eyes and think, uh, by imagining the distance of earth and sun, and where we are going to put this telescope, so this is really, uh, really is a science achievement, we can say. So it's away from earth, and it's called the second Lagrange point, or L2. So, okay, I will make a video about Lagrange points. Okay, and where we are putting our satellites, with the how we match the point, and how we are putting that aircraft, sorry, where we are putting our spacecrafts in space. So it's a Lagrange point is very important in geographical perspective, or geographical studies. If we, when we are study geography, that point comes. Okay, so thank you for watching, or thank you for listening. Subscribe, like, and share Adventure IS. Thank you.